Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of KG class. I'm your English teacher from Preschool of tomorrow. कैसे हैं आप सब? Hope so all of you will be fine. So dear students, कल हमने एक स्टोरी सुनी और उसमें हमने क्या सीखा कि हमें दूसरों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए और हमेशा मिलजुल के प्यार से रहना चाहिए। आप सब ने इस बात पे जरूर अमल किया होगा क्योंकि आप सब बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा 5th लेक्चर है और आज के लेक्चर में आपको पता है कि मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाली हूँ। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये स्टोरी भी 4 फ्रेंड्स की है। दिस स्टोरी इज अबाउट 4 फ्रेंड्स। सबसे पहला Q for क्वेल। क्वेल चूंकि दिखने में बहुत ही प्यारा होता है और इसकी आवाज भी बहुत खूबसूरत होती है। सेकंड फ्रेंड इनका था R for raccoon। R for raccoon की स्पीड बहुत तेज होती है। And their third friend is S for snail. S for snail is very slow. ये बहुत सुस्त है। S for snail आपको पता है कि बहुत स्लो चलता है। Yes. And their fourth friend is T for tiger. आप सबने टाइगर तो जरूर देखा होगा और आपको पता होगा कि ये सबसे तेज होता है। इसकी स्पीड तो बहुत तेज होती है। ये चारों फ्रेंड्स एक दिन सैर को जा रहे होते हैं। ये चारों फ्रेंड्स चूंकि Q for quail, R for raccoon and T for tiger की स्पीड तो बहुत तेज होती है, लेकिन बदकिस्मती से S for snail तो बहुत स्लो चलता है। ये तीनों फ्रेंड्स आगे निकल जाते हैं, S for snail बहुत पीछे रह जाता है। T for tiger S for snail के पास आता है और उसे बहुत डांटता है और कहता है कि आप तो बहुत स्लो हो, हम आपको अपनी दोस्ती में नहीं रख सकते, जिसकी वजह से S for snail बहुत रोने लग जाता है और वो Q for quail और R for raccoon को जाके बताता है कि T for tiger ने उसे ऐसे कहा। तो dear students, Q for quail and R for raccoon T for tiger के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि अगर हमारा कोई फ्रेंड स्लो हो तो हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए बल्कि उसे अपने साथ लेकर चलना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपकी क्लास में भी कोई स्टूडेंट स्लो हो तो आपको उसे छोड़ना या तंग नहीं करना चाहिए बल्कि उसे अपने साथ लेके चलना चाहिए। यस, आप सबको तो ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। वेरी गुड। अब हम इनके नेम राइट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट क्वेल। ड्रॉ अ सर्कल on the first 3 lines and draw a slanting line Q, Q, capital Q and small u, Q, U. Then we write small a, Q, U, A, quail, I, L, quail, Q for quail. Next we write the name raccoon. Capital R on the first 3 lines. Next we write small a, R, A, double C, double O, N. Raccoon. Yes, very good. Q for quail, R for raccoon. Next we write snail. Write capital S. Then we write small n, S, N, A, snail. Write small I, S, N, A, snail, I, L, snail. Yes. The fourth one is T for tiger. Write capital T on the upper 3 lines and write small I in the middle 2 lines. T-I, tie.
small G, T-I-G, small E and small R, T-I-G-E-R, tiger. Very good. Now everyone, take out your English book. Open page number 4. सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं अपना प्रीवियस लेक्चर. N for nightingale, O for otter, P for peacock. Yes, आप सबने ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होगा. Today we learn Q. This one is capital Q and this one is small q. Q का साउंड क्या है जी? Q का quail, Q का quail. Yes. अब आप मुझे बताएं कि Q के बाद कौन सा लेटर आता है? Yes, very good. R. This one is capital R and this one is small r. The sound of R is R. Raccoon. 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 This one is capital S and this one is small s. Sound क्या है S का? S. Snail. Snail. The letter which comes after S is T. This one is capital T and this one is small t. The sound of T is T. Tiger. Tiger. आप सबने यहाँ तक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और उनके फ्रेंड्स भी फाइंड आउट करने हैं. ठीक है. Now open your notebook. First of all, we write date with the help of your parents and also first of all you write day and date with the help of your parents. Yes, homework पे take. Yes, very good. आज का हमारा टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों? Q. Yes, Q. Write Q, capital Q. 2. Capital Q. 2. T. Q2. T हमारा टॉपिक है. Very good. हमने कैपिटल और स्मॉल लेटर्स लिखने हैं दोनों. सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे? Draw a circle on the first 3 lines. Yes, and draw a slanting line in the middle of. Yes, ये क्या है? Capital Q. Yes, draw another circle in the middle 2 lines and draw a slanting line with a small curve. Capital Q, small q. Yes. Next we write R. Draw a standing line and draw a curve and draw a slanting line. Yes, this is capital R. And next we write small r. Draw a standing line in the middle 2 lines and draw a slanting line. Small r. आप सबने इनके नीचे नीचे पूरे पेज पे बहुत ही प्यारा प्यारा राइट करना है. Turn your page. Write day, date. होमवर्क पे टिक लगाएं. इस पेज पे भी टॉपिक राइट करना है. Q, 2, T. हमने Q और R तो राइट कर लिया. अब हमने देखना है कि S कैसे राइट करते हैं. राइट कैपिटल S. Yes, capital S and small s in the middle 2 lines. Capital S हमने फर्स्ट 3 लाइंस पे राइट किया और स्मॉल s सेंटर वाली 2 लाइंस में राइट करना है. Yes. Next we write T. Draw a standing line and slipping line on the top. Capital T. Yes. Next we write small t. Standing line with a small curve and draw a slipping line in the middle. Small t. आपने S और T के नीचे भी पूरे पेज पे राइट करना है. Yes.
सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी और उसके साथ साथ हमने कुछ लेटर्स पढ़े, उनके साउंड्स, उनको हमने राइट करना सीखा। हमारी स्टोरी का मोरल क्या था कि अगर आपके दोस्तों में कोई स्लो हो तो हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसे साथ लेकर चलना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे मेरी इस बात पे अमल करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा प्यारे बच्चों। सी यू, अल्लाह हाफिज।